जो आईटी मशीनिस्ट ट्रेड से है वो अपना ट्रेड को पढ़ने के लिए यहाँ मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट हम जाएंगे सेफ्टी चैप्टर पे, फिर मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स, हैंड टूल्स, मेजर एंड मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स एंड ऑपरेशंस, फॉर्जिंग, हीट ट्रीटमेंट, सेपर, स्लॉटर, लुब्रिकेंट, प्लानर, लेथ, मिलिंग, ग्राइंडिंग, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर हम जाने के बाद फर्स्ट आज जाएंगे सेपर पर जो भी क्वेश्चन से आज हम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, 38 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन से। तो देखिए, ए बुल गियर इन ए सेपर इज ड्रिवन बाय स्लाइडिंग ब्लॉक, ए पाइनियन, ए शेफ्ट और पुली। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? मेरे से आंसर देने से पहले आप ही आंसर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर है। यहाँ पर बी आंसर है, यानी कि हमारा ए पाइनियन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सेपर रोटरी डबल in a seper rotary motion is converted into reciprocating motion by means of option number A worm and worm wheel, B rack and pinion, C rock arm and bull gear, D shaft and pulley। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा। सी, यहाँ पे आंसर है सी, यानी कि रॉक आर्म एंड बुल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द बुल गियर इन ए सेपर गिव्स रैम वन फॉरवर्ड स्ट्रोक, वन रिटर्न स्ट्रोक, वन फॉरवर्ड एंड वन रिटर्न स्ट्रोक, नो मूवमेंट। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। ये सी होगा। तो वन फॉरवर्ड एंड वन रिटर्न स्ट्रोक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन रैटचेट एंड पावर मैकेनिज्म द रोटरी मूवमेंट ऑफ द गियर एंड क्रैंक स्लाइड इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर मूवमेंट बाय कनेक्टिंग रॉड और ट्रैक एंड पाइनियन, वर्म एंड वर्म व्हील और शेफ्ट एंड पुली। तो देखते हैं दोस्त यहाँ कौन सा और आंसर आता है। ये ऑप्शन नंबर 1 जो कि कनेक्टिंग रॉड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड ऑन सपर टू रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉरवर्ड स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, रिटर्न स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 6, ए सेपर टूल हैज साइड एंड फ्रंट क्लियरेंस, ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू द लेथ ऑफ टूल, more than that of lathe tool, less than that of lathe tool, none of the above। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लेस देन दैट ऑफ lathe tool। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following types of shaper is used to remove metal during its return stroke? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड शेपर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल शेपर, ऑप्शन सी पुश टाइप शेपर, ऑप्शन डी ड्रॉ टाइप शेपर। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। उसके बाद HSS सेपर टूल कैन रेसिस्ट हीट एट अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस। तो आएगा ये ए, ऑप्शन नंबर ए 600 डिग्री सेल्सियस। द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ कटिंग टू रिटर्न स्ट्रोक ऑफ सेपर इज 1:3, 3:1, 2:3 और 3:2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। A feed of support take place at the end of return stroke, at the middle of return stroke, at the start of cutting stroke, at the middle of cutting stroke। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। A hydraulic supper is driven by एयर प्रेशर, स्टीम प्रेशर, लिक्विड प्रेशर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ स्ट्रोक ऑफ सेपर रैम शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द लेंथ ऑफ काट टू टेकन, लेस देन द लेंथ ऑफ द काट टू टेकन, मोर देन द लेंथ ऑफ काट टू बी टेकन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए टिप टूल इज मोर यूजफुल देन HSS टूल बिकॉज इट कैन रेसिस्ट मोर हीट, इट कैन कीप द कटिंग एज शार्प, कटिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज और ऑल द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। ए राइट हैंड सेपर टूल कैन रिमूव मेटल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। तो इसका आंसर राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशंस इज नॉट परफॉर्म ऑन सेपर? मैशिनिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, मैशिनिंग वर्टिकल सरफेस, कटिंग ग्रुप्स एंड क्यूए, कटिंग भी थ्रेड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। Which one of the following separate tool is chosen when narrow slots are to be cut? Straight raft tool, offset shaping tool, grooving tool, round notch tool। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
Which one of the following is not the operation performed by SFOR? Cutting square thread, cutting splints, cutting QA, machining concave surface. इसका आंसर ए हो जाएगा सही आंसर. Which one of the following is not the part of a SFOR? बुलगियर, रैम, टेलस्टॉक, क्लेपर बॉक्स. ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा. Which one of the following is used to align the SFOR vise with the machine stable in position? Tie square, dial test indicator, straight edge, vernier caliper. इसका सही आंसर बी dial test indicator. The size of SFOR is specified by the maximum length of stroke. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर. Which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सा सही है? The table of SFOR can be moved in all the axes if the overhanging of the tool is less than 20 mm. Rough finish will result. Option number C. Production of flat surface in a SFOR is by generation process. Option number D. Parallels are made out of cast iron. तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी. प्रोडक्शन ऑफ फ्लैट सरफेस इन ए SFOR इज बाय जनरेशन प्रोसेस. Which one of the following सेफर mechanism produce less noise? तो इसमें से कौन सी सेफर मशीन में सेफर मैकेनिज्म में साउंड कम होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलिक मैकेनिज्म. हाइड्रोलिक मैकेनिज्म. Question number 23. Which one of the following statement is correct? The table of a standard shaper can be swiveled to any angle. Draw card shaper are commonly used in industry. For shaping a surface, the length of workpiece and stroke length set must be equal. Workpiece which are difficult to hold, a standard shaper table can be held machine by using a travel head shaper. इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी. In shaping work, the selection of cutting speed depends upon the type of material to be shaped. Cutting tool material both A and B. तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी. The end of the cutting stroke, the middle of the cutting stroke, beginning of the cutting stroke, none of the above. The cutting speed of the tool in mechanical shaper is mixed at. Sorry. Question number 25 फिर से. The cutting speed of the tool in mechanical shaper is maximum at the end of the cutting stroke, middle of the cutting stroke, beginning of the cutting stroke और none of the above. इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी. If the crossfeed screw has a pitch of 40 mm and the powell is set past two teeth of a 50 tooth ratchet, the crossfeed per stroke will be 0.8 mm, 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. Which one of the following statement is not correct? For changing the direction of feed, powell is to be rotated 180 degree. Option B. When shaping T-slot, the function of caliper box is not used. Option C. Powell mechanism of a shaper is a unit. Powell mechanism of a shaper is a unit which regulates the speed of RPM. Option D. When cutting T-slot in a shaper, caliper block need not to be lifted. इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्लेपर बॉक्स ऑफ ए shaper is used to lift the tool during cutting stroke. Option number B. Lift the tool during return stroke. Option number C. Lift the tool in the middle of the stroke. Option number D. Avoid overhanging the tool. तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी. Which one of the following parts of the shaper supports the table? Base, ram, saddle, क्लेपर बॉक्स. इसका सही आंसर बेस. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी saddle. When shaping a parallel surface, the workpiece should be properly seated. Which one of the following is used for seating the workpiece? V block, angle plate, parallel plate, round rods. Parallel surface, the working should be properly. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैरेलल ब्लॉक. Which one of the following statement is not correct? इनमें से देखना. ऑप्शन नंबर ए में क्या है? oblong slot in a strap clamp are meant for adjustment between bolt and workpiece. Option number B. Clamping should be decided according to the shape and size of the workpiece. Option number C. While they are clamping, the distance between bolt and workpiece edge should always be greater.
Workpiece should be held between centers of index head when cutting splints and spur teeth. तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, while clamping the distance between bolt. हेलो हाँ एलो ओके माने किछु कंप्लेन करबार अछि एटा तो की लिखबो बोल तो काके कंप्लेन करबी रे ओ जन 300 टका नहीं मिले से अबे के करवा को कर जे की लिखबी जे हमर पहुंचे नहीं बोलिए तो बोल रहो प्लीज दया पूर्वक की बोलबो की जान हे लेडा तो ये मनसुदी আসছে माने केमन আমি বুঝতে না পারছি কি লিখবো ए हे और टुकु डेरी पर আমি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাই দিছি না আচ্ছা ও ঠিক আছে হুম ধন্যবাদ